Study of resonance effect in organic chemistry or in chemical bonding. Important concept was conjugation. Then p orbitals shall be in parallel position, right? Otherwise overlapping or conjugation is not possible. Basically conjugation is not possible. Next it shall be planar molecule, either sp2 or sp3, sorry or sp. Okay, so these were the conditions of resonance. Now based on this very basic knowledge, we define organic cyclic molecules into three types. One is aromatic, next one is anti-aromatic, and the third one is neither aromatic nor anti-aromatic, which we will call non-aromatic. Okay. So first of all, just we have starting with very basic things. So if there is 4n plus 2 pi electrons, remember I am considering all these things after I have ascertained that resonance is there. Okay, so after resonance is there, we'll check aromaticity in this form. Okay, so let us see, first let us do aromatic and anti-aromatic. So I have first checked whether resonance is there. There was resonance. So now I will check how many pi electrons are there. So what I have got is 4n plus 2 pi electrons, where n is a whole number starting from 0. Okay, so if this is the case, then it is directly you can say it is aromatic. In this case what happens is electrons goes to bonding molecular orbital. Okay, electron goes to bonding molecular orbital and energy decreases, because bonding molecular orbital will have lesser energy that you have studied in chemical bonding. And obviously if the energy decreases, the simple thing that we have learned during chemical bonding, the stability will increase. On the other hand, if you see this thing, if you say this thing and if you divide it by 2, what is 4n plus 2? First of all, let us find out what is 4n. Like 6 is 4n plus 2, right? If you see, if it is 6 number of pi electrons, then does it come 4n plus 2? If n is equal to 1, then you will get 6 pi electrons, right? So how many pairs are there? So if you see, this is always odd pair. So if there is odd pair, okay, if there is odd pair, it will be aromatic. Now if there is 4n pi electron, it's like, okay, 4 pi electrons. Okay, so if it is 4 pi electrons, how many pairs are there? 2. That is even. Remember, if there is even pair, it will be anti-aromatic. If there is even pair, it will be anti-aromatic. In this case, the electron goes to anti-bonding molecular orbital, and hence the energy will increase and stability will decrease. So remember, anti-aromatic is extremely unstable. ठीक है, एरोमेटिक नहीं भी होगा कंपाउंड फिर भी स्टेबल है, बट एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होता है. ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग. नेक्स्ट इज, if suppose it is not is equal to aromatic, it is not is equal to anti-aromatic, neither aromatic or not anti-aromatic or non-planar. ठीक है, if the molecule is not planar, suppose if the molecule is not planar, then it will be called as non-aromatic. Remember, it will be called as non-aromatic. I'll abbreviate it as Na from now on.
Anti-aromatic I'll abbreviate as AA, and aromatic I'll abbreviate as A. Okay, so non-aromatic, if it is neither aromatic nor anti-aromatic, or even if it is non-planar, suppose the molecule is non-planar, then it will be non-aromatic. Okay, directly you can say. In this case, the electron goes to bonding orbital. Bonding molecular orbital energy will be low and it will be stable. Okay. Now, first of all, what will be the stability order in this three kinds of compound? What will be the stability order? The stability order would be, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक. ठीक है, बिकॉज एरोमेटिक में रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है, सब प्लेनरली इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट व्हेयर द एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन इज, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अटैक, एंड हेंस एरोमेटिक विल हैव द हाईएस्ट स्टेबिलिटी. उसके बाद में एंटी आएगा या नॉन आएगा, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होता है. ठीक है, अभी देखो तुमको ये याद रखना है और ये समझना है कि एंटी एरोमेटिक के केस में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है, इसीलिए एंटी एरोमेटिक है. व्हाई इट इज एंटी एरोमेटिक? दिस एंटी वर्ड इज कमिंग फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो इट इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल. सो नॉन एरोमेटिक विल बी स्टिल स्टेबल. ओके, समझ में आ गया? So non-aromatic more than non-aromatic more than anti-aromatic. Anti-aromatic means electron going to anti-bonding orbitals. दिमाग में घुसा लो. Anti-aromatic means electron is going to anti-bonding molecular orbital. ठीक है, so this is the basic thing that we have completing right now, and we are going to go for the details obviously. Okay guys, so now we'll be studying about conditions of aromaticity. Okay, in a nutshell, I have tried to put everything in one single paragraph, you can say, as you can see in your screen right now. So if you see, first thing we have to consider whether it is planar or not. Okay, so how to understand whether it is planar or not, we'll go into details. Things will be crystal clear at the end of this video, so don't worry. Just at this moment, just remember it has to be planar. Okay, next, cyclic, obvious requirement. Aromaticity means cyclic. Okay, done. Conjugated system required. Okay, resonance has to be there. Next, closed pi orbital loop, most important part of aromaticity. Don't forget, closed pi orbital loop, and it is governed by Huckel's rule, which says 4n plus 2 pi electrons must be there, which I have said you odd pairs. Okay, it has to be odd pairs. That's it. Just remember odd pairs. Okay, odd pairs ho gaya. Now this odd pairs of electrons, you have to count which one, not every one, right? You can't count every pi bonds. That's where we do the mistake. We count every pi bonds. Do not count every pi bonds. You have to count only those pi bonds or the electron pairs which are in that closed loop periphery. This periphery word is very important. Okay, this periphery, I'll show how important it is just in few minutes, but this will be very important, this periphery part. Okay, so now let us deal with the monocyclic compounds. So let us check whether this compound that we have listed over here is aromatic or not. So let us check one by one. Here there is resonance, alternate double bond, and we can see there are 6 pi electrons, that means 3 pairs, so it is aromatic. So direct question, direct answer. Here there is one pair, so it will be aromatic, odd pair. Here there is 1 plus 2 pairs are there, because there is one negative charge or lone pair also. So even pair, it is anti-aromatic, highly unstable compound. Here you can see there are 3 pairs, two in the bonds and one lone pair, obviously. So it will be directly aromatic compound, because 3 pairs means odd pairs. 1 2 3 pair, odd pair, aromatic. 1 2 3 4, so here it is even pair. Even pair means anti aromatic. Okay, and as you can see, all these compounds that we have done, everybody will undergo resonance, so there is no question of making it non aromatic, right? If you see this one, the double bonds are not in planar configuration, so this is a non-planar compound and hence it is non-aromatic. Okay, this is non-aromatic. This is cyclooctadiene, so this is non-aromatic. Cyclooctadiene is non-aromatic, so this one you have to remember at this moment. I will explain you the reason why it is non-aromatic. So let us first go into the reason of it, why it is non-aromatic. See, this pi bond is like this, right? See, the p orbital is like this, while if you see this one is like this, right?
So this and this are not in the same plane, so conjugation will not occur. Though there is alternate double bonds, conjugation is not possible because the p orbitals that are forming the pi bond are not in the same plane, so that is why it is non-planar compound. Okay, so I hope this is understandable by you. Now after this we'll be dealing with heterocyclic aromatic compounds. Here we have taken some heterocyclic compounds. Heterocyclic compounds means, so there is another different type of atom. As you can see here, it is oxygen, sulfur, nitrogen, and here again nitrogen, which is inside the carbon ring. So in heterocyclic compounds also we have to check whether it is aromatic or not. If you see, there are two bond pairs, which will be two pairs basically of pi electrons, and one there. If you count this lone pairs, you will get two lone pairs. Remember, only one of the lone pair will form the part of the ring and the other won't be the part of the ring. So here basically in the peripheral system, if you see the peripheral system of the ring, I have explained you previously what is peripheral system. आई हैव सेंट सेज दिस क्लोज लूप पेरीफेरी, क्लोज लूप के पेरीफेरी में जो जो पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है, बाकी छोड़ देंगे. तो इसके क्लोज लूप के पेरीफेरी अपने पास एक दो तीन पेयर आता है, तो थ्री पेयर्स मीन्स इट इज एरोमेटिक, ठीक है, it is aromatic. Next this one, this is also same case, so this is aromatic. Same case, this is aromatic. If you see this one, 1 2 3, so question will be whether these two electrons will be inside or outside. These two electrons are outside the ring, you have to remember this. Okay, this doesn't form a very good this doesn't form a part of the ring, so ring is this much. So in the ring there are 6 pi electrons, so that is means three pairs, that is odd and hence it will be aromatic. ठीक है, थोड़ा फास्ट फास्ट जा रहा है इसमें क्योंकि ये सब चीज़ हम लोगों ने 11th क्लास में ऑलरेडी कर लिया है. सो आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए ये सब उतना आप इट इज़ एक्सपेक्टेड आप लोग थोड़ा कर लिए हो, ठीक है, इट्स एक्सपेक्टेड यू हैव डन इट. सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस थिंग्स, only the basic things. There are some certain things which I am emphasizing right now, which will be important for the examination. If you see, this lone pair of electron is outside the ring, so this lone pair of electrons is available for donation, okay, for donation. So hence this is a very good base. Pyridine is a very good base, okay. Pyridine is a very good base because the lone pair doesn't form the part of the ring. If the lone pair would have formed the part of the ring, it wouldn't have been a very good base, because then this electron would have been lost in the aromaticity that we don't want, whether we are while we are talking about a base. Okay, it's a very good base because the electron doesn't form the part of the ring. Okay, now we'll be discussing the polycyclic hydrocarbons. Okay guys, now these are very important. Okay, this polycyclic part is very important. Remember, we have to count the pi electrons in the closed loop periphery. इसमें ऐसे जाएंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे ऐसे, दिस इज क्लोज लूप पेरीफेरी, ठीक है, ऐसे जाएंगे. देख लेते हैं. विल नॉट डायरेक्टली काउंट द डबल बॉन्ड्स, विल गो लाइक दिस. सो हियर देयर आई विल गेट one pi electron, here I'll get another pi electron, here I'll get another pi electron, here I'll get another, here, 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 here. Okay, so this much amount of pi electron will be getting over here. So if you see, there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pi electrons. 10 pi electrons means 5 pairs. So 5 pairs means odd, and odd means aromatic. Odd means aromatic. ठीक है. Now let's see this one. This was naphthalene and this is anthracene. You know all these things. This is anthracene. So in anthracene, now we'll be checking how many pi electrons are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pi electrons. So that means 7 pair. That means it is aromatic. Directly you can say. Now see, you could have asked me, sir, there are 7 bonds, so there will be 7 pairs. You could have done it easily. Why such counting is there? Now only you will understand why such counting is required. Do this one. Okay, this is very important. This is called S-naphthalene. Okay, this is very important. So I'll go by this direction, right? Like this, we'll follow this path. Okay. Now let us see. I'll start from this point. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pi electrons. So that means 7 pair. That means it is aromatic. Directly you can say. Now see, you could have asked me, sir, there are 7 bonds, so there will be 7 pairs. You could have done it easily. Why such counting is required? Do this one. Okay, this is very important. So 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pi electrons. I hope you have drawn this structure. You can see this pi electron we have not taken. Why? Because we will take only the pi electron in the periphery. While writing the Huckel's rule, I had given you this new concept. You will only take it in the periphery. Closed loop के periphery में जो जो pi electron है उसी को लेना है, बाकी नहीं लेना है. तो कितने pi electron हुए वो देखते हैं हम लोग इधर पे 11 पाई इलेक्ट्रॉन. नाउ दिस इज नाइदर ऑड पेयर नॉट इवन पेयर, ये तो फ्रैक्शनल पेयर है, तो फ्रैक्शनल पेयर के लिए एंटी एरोमेटिक. ठीक है, नेक्स्ट ये वाला चेक करेंगे. दिस इज कॉल्ड पाइरीन. दिस इज पाइरीन, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. लेट अस गो फ्रॉम दिस पॉइंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pi electrons. Okay, 7 pairs aromatic. Now if you would have counted the double bonds over here, 1 2 3 4 5 6 7 8, so that would have come out to be 16 pi electrons, that is 8 pairs. ठीक है, so 8 pairs मतलब आपका हो जाता है इवन. और आप बोल देते क्या एंटी एरोमेटिक है, बट एंटी एरोमेटिक तो ये है नहीं, ये तो है आपका एरोमेटिक, क्योंकि आपको सिर्फ पेरिफेरल वाला पाई इलेक्ट्रॉन लेना है, बीच वाला तो नहीं लेना है. ठीक है, इसमें एक बॉन्ड ही पूरा कैंसिल हो गया. देखिए, so why this counting is important. Now I hope you have understood the Huckel's rule in a very clear fashion than that was ingrained in your mind earlier. बहुत छोटा करके पढ़ा रहा है, थोड़ा आप रिवाइज करोगे तो ये सब ठीक हो जाएगा. ठीक है, now we'll be discussing about a special class of compound which is called annulenes. Okay, the azulene part, there is another compound called azulene, which is a non-benzenoid compound that will be covered in the sheet that will be given to you right after this video. So there that will be covered. So in this annuline, if you see, this kind of compound is basically CnHn. Okay, so this kind of compound is called aniline. Okay, annuline, sorry, annuline. So C6H6 is also an annuline, as you know, or you can go for this compound. This is another annuline. So what happens is, number of pi electron is very important over here. Annuline is written as, suppose here there are, you can see there are 4 pi electrons, so it is written 4 annuline. ठीक है, so this is written like this. So obviously, as you can see, this annuline that we have taken over here, this is anti aromatic because this is having even number of pi electrons. Okay, even pairs of pi electrons. ठीक है, or you, if you go for this one, this is cyclooctadiene, that you have already, I have explained you these things with its bucket top type structures where it is non-planar. So this is a non-planar system. Okay, normally if you see it, you will get 4 pairs, so you will say it is anti-aromatic. Obviously it is anti-aromatic, but see, while the number of sides in a polygon goes above 6, we have already explained that strain becomes too much. Okay, above 6 strain is too much, so as there is lot of strain, so there will be increase in energy and stability will decrease, hence it assumes a top type structure like this. Okay, it assumes a top type structure like this. Okay, so in this case the strain is much lesser. This is a flexible type of structure. Okay, and this is favorable structure. So in this case this is non planar. See, इट वॉज एंटी एरोमेटिक, बहुत स्ट्रेन था. ठीक है, एंटी एरोमेटिक था, बहुत स्ट्रेन था. ऐसे एंटी एरोमेटिक होने से क्या होगा, आपका अनस्टेबल हो जाएगा. अभी क्या हुआ, स्ट्रेन कम करने के लिए इसने टफ शेप ले लिया. अब ये एक फ्लेक्सिबल शेप है, ये आराम से है, तो आराम से है मतलब क्या हुआ, एनर्जी इसका कम हुआ तो स्टेबिलिटी इसका बढ़ा, है ना, स्टेबिलिटी बढ़ा, पर बन गया ये नॉन एरोमेटिक. लेकिन नॉन एरोमेटिक होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन एरोमेटिक स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होता है. ठीक है, सो टू गेन स्टेबिलिटी ओनली एंटी एरोमेटिक चेंजेस टू नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर ओवर हियर, एंड दैट इज व्हाई this planar structure of cyclooctadiene is not available. Okay, you will get the top shaped only. You have to know why it has happened. Somebody is saying you top shaped है, bucket shaped है, वैसे आपको ठीक है, आप सोच रहे हो कि उसको याद करना है, याद नहीं करना है उसको. आप सोचो क्यों इसका ये प्लेनर शेप नहीं हुआ, बिकॉज इसका जो एंगल स्ट्रेन है बहुत ज़्यादा होता है. ये आपने ऑलरेडी बेयर स्ट्रेन थ्योरी अभी पढ़ोगे तो समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको बेयर स्ट्रेन थ्योरी मालूम है.
लेकिन उस टाइम पे पढ़ाते तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए जो भी आपको पढ़ाया होगा उस टाइम पे आपको नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके पहले बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी कर दिया होगा तो कराना चाहिए था। सो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी से क्लियर है कि ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट स्टेबल, ठीक है। तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, इसका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, इसका एंगल स्ट्रेंथ कम करने के लिए इसने बकेट शेप लिया जो बहुत फ्लेक्सिबल है। इससे क्या हुआ, इसका जो एनर्जी है वो डाउन हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया और बन गया इसने नॉन एरोमेटिक। अभी नॉन एरोमेटिक तो स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी और एक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है 10 एल्यूलिन, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। ठीक है, दिस इज 10 aniline. I'll just draw the double bond also wherever it is required. Okay, this one, this is this. Okay, now this one. Now see, this is a C structure because everybody is in the same side. So if there is a C structure, this is a planar structure. Okay, this is a planar structure, but the problem is again the same thing is there. What happens is uh, uh, whenever this is having a planar structure, this is a, if you see, this is a 10 carbon ring, right? 10 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, 10 carbon ring. So 10 carbon ring, again there will be a problem of your एंगल स्ट्रेन। सो एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए क्या करता है, इसका एक हाइड्रोजन इधर चला जाता है और एक हाइड्रोजन इधर चला जाता है, ठीक है। तो एक सामने आ जाता है, इसके इधर चले जाना मतलब क्या है, इसके सपोज आपके पास जो अभी जो स्क्रीन में देख रहे हो, आपके आपके तरफ एक जा रहा है, ठीक है, और ये एक आपके दूर जा रहा है। तो जब ये सपोज एक पॉइंट इधर आ गया और एक पॉइंट इधर आ गया, तो जो प्लेनरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल है वो चला जाता है। तो प्लेनरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल चले जाने से क्या होता है, जो लूप होता है, ठीक है, प्लेनरिटी में जो कॉन्जुगेटेड लूप होता है, ऐसे एक लूप होता है ना इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन को जो रिंग बनते हैं, ऐसे ऐसे दिखाए थे आपको बेंजीन के केकुले टाइप स्ट्रक्चर के लिए, जो ऐसे जो रिंग बनता है जिसमें प्लेनरिटी, जिसमें आपको प्लेनरिटी का बहुत जरूरत पड़ता है, ये रिंग बनने के लिए, जो कॉन्जुगेशन होने के लिए प्लेनरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हाइड्रोजन इधर चला जाता है, ये हाइड्रोजन उधर चला जाता है, एक कार्बन इसका मतलब सामने आ गया और एक कार्बन आपका पीछे चला गया। तो अभी क्या हो जाएगा, जो प्लेनरिटी है वो लॉस्ट हो गया, तो ये बन गया आपका ट्रांस एन्यूलिन। तो ट्रांस एन्यूलिन में क्या होगा, प्लेनरिटी नहीं रहेगा। प्लेनरिटी, इफ द प्लेनरिटी इज नॉट देयर, देन द लूप, the conjugation loop is basically destroyed and this becomes non aromatic. This is very important, you have to remember it, 10 aniline। बट अभी आपको समझ में भी आ गया। अब अभी क्या होगा, नाउ यू विल ऑटोमेटिकली रिमेंबर इट बिकॉज यू नो द बैकग्राउंड स्टोरी बिहाइंड इट। बैकग्राउंड स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ यू विल रिमेंबर इट, ठीक है। तो सिस में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका जो कॉन्फॉर्मेशन है, वो सिस का जो कॉन्फॉर्मेशन है दैट इज हैविंग लॉट ऑफ स्ट्रेन, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो इसके लिए क्या होता है, ट्रांस होता है। ट्रांस होने के चक्कर में क्या हो जाता है, आपका उसका जो प्लेनरिटी है वो चला गया। प्लेनरिटी चला गया तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। 12, I'll show you something now। 12, 16 और 20 का जो एनुलिन है, ये सब आपका नॉन प्लेनर होता है, ठीक है। 12, 16 और 20 का जो है नॉन प्लेनर होता है। 14 और 18 आपका प्लेनर होता है एंड दैट इज एरोमेटिक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 14 एनुलिन या 18 एनुलिन दे दिया तो इसको एरोमेटिक लिखना है। देखिए इसका भी रीजंस है, लेकिन इसका रीजंस एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह हमको पढ़ाना पड़ेगा। सो वो नहीं पढ़ा के आपको ये चीज़ हम ठीक से समझा नहीं पाएंगे। अभी तक तो समझा दिए जो जो इजी इजी चीज़ है। अभी 10 से जब क्रॉस हो जाता है ना, 12 14 16 18 20, तो थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका सिलेबस में डायरेक्टली है नहीं, 10 के ऊपर आपको पूछा भी नहीं जाएगा बिकॉज वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए, ठीक है। सो आपको सिर्फ ये याद रखना है, 14 और 18 जो आपका ऑड पेयर्स है दैट विल बी एरोमेटिक। 12 16 20 जो आपका इवन पेयर्स है वो हो जाएगा आपका नॉन प्लेनर, ठीक है, दैट मीन्स नॉन एरोमेटिक, ठीक है। सो दैट बेसिकली एंड्स आवर पार्ट ऑफ aromaticity in a very short time, in a very short video. I have tried to explain each and everything. Another thing is there which I am going to explain to you right now. I'll take azulene, okay. It's a non-benzenoid compound, ठीक है, it's a non-benzenoid compound. So if you see this one, this is azulene, okay। So
this is azulene. Okay, now if you see this is having 10 pi electrons over here. If you can directly see this is having 10 pi electrons. ये आपके पेरिफेरी से जाओगे भी तो 10 आएगा, ठीक है। इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो आपको इसको इसको अलग बना देता है, एजुलिन को बहुत अलग बना देता है दूसरों से, ठीक है। Now this is an isomer of naphthalene. Remember, this is an isomer of naphthalene. Naphthalene is a non-polar compound. You know, mu will be equal to 0. The dipole moment is equal to 0. लेकिन इसका क्या, ये पोलर है, ठीक है, ये पोलर है। ये देखा गया है कि ये पोलर है। इसका mu is approximately 1.2d, 1.2d approximately, और दिस इज soluble in polar solvents, ठीक है। और इसका इंटेंस एक ब्लू कलर भी रहता है। तो ये सब चीज़ देख के हमारे दिमाग में या साइंटिस्ट लोगों का दिमाग में कुछ कुछ आया कि ये क्या है, क्यों होता है, इसका इसका डाइपोल मोमेंट क्यों आया। सो आफ्टर दैट they understood one thing. This is 10 pi electrons. Obviously this is aromatic. It's known to you the totality, in totality this is aromatic, but it is also known to you here there are 3 pairs, here there are 2 pairs. So this will be aromatic, but this will be एंटी एरोमेटिक। सो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का एक जोड़ बंधन इधर पे बन रहा है। ये जो बंधन है प्यार का बंधन है, लेकिन प्यारा नहीं रहेगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक तो बहुत अनस्टेबल रहता है। तो इसके केस में क्या हो सकता है जो इसको पोलर वगैरह बनाता है और इसको स्टेबिलिटी भी देता है। तो ये स्टेबल भी है, ऐसा नहीं है कि ये अनस्टेबल है। तो ये क्या होता है देखिए, ठीक है, मैं पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं। नाउ इफ यू सी दिस वन, सो इसमें क्या होता है, this is plus, this is minus, this kind of structure change happens. Okay, one of the bonds, basically one of the bond that was there in this ring has shifted as a lone pair to this ring. Now if you see this is having 3 pairs, right? Actually there are 1 2 3 4 5 6 number of pi electrons, that means 3 pairs. So 3 pairs makes these odd pairs and this becomes aromatic. Similarly here if you see 1 pair, 2 pair and 3 pair, because this double bond is common to both the rings. So here also you are getting 3 pairs and it makes it aromatic again. So if you see both rings are now aromatic and this gives a extra stability to azulene which was not present in the original structure, ठीक है। और अभी देखिए इसमें है पॉजिटिव, इसमें हो गया नेगेटिव रिंग। सो यू कैन से दिस इज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस where there is some positivity over here and obviously there is some negativity over here. So there is a net dipole moment, positive से negative तक net dipole moment जाएगा, and that is why you can see such kind of dipole moment over here. So dipole moment आपको देने के दिया जाएगा कभी कभी कुछ कुछ कंपाउंड्स में। आपको तब चेक करना है कैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से दोनों रिंग एरोमेटिक होता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस रिंग से इस रिंग गया तो दोनों रिंग एरोमेटिक हो गया, इस रिंग से इस रिंग जाता तो भी शायद होता, वो आपको चेक करना पड़ेगा। नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 है, ठीक है। इसमें से एक चला जाता तो ये 4 पेयर्स हो जाता, ये हो जाता एंटी एरोमेटिक। इसीलिए इसमें से यह आ गया तो ये रह गया एरोमेटिक के एरोमेटिक की, लेकिन ये भी बन गया एरोमेटिक। तो दोनों एरोमेटिक बन गया, तो बन गया ये बहुत ज़्यादा स्टेबल। और बट स्टेबल होने के चक्कर में इसने अपना डाइपोल मोमेंट 1.2 कर दिया, ठीक है, 1.2d कर दिया। एंड फॉर दैट रीजन you can see a net dipole moment in this compound, ठीक है। So the worksheet given to you or the sheet given to you will have this kind of problems. All problems are solved, so you don't need to think very much about it. Hope you have understood everything that has been taught today, and perhaps this has clarified most of the concepts that are related with aromaticity. Please ask me if you have any doubts so that we can clarify it then and there. Thank you.